There's news, there's sense, and there's sensationalism. This show is going to be all about that last bit. प्रेमी आफ्ताब कैसे बन गया कसाई? Yes, like I said, there's going to be a lot of sansani in this episode. A gruesome case of murder surfaced this week in New Delhi. 27-year-old Shraddha was murdered and then chopped to death by her live-in partner, Aftab Poonawalla. The murder took a sansani turn. You're going to hear a lot of this word in this episode. Sansani number 1. Police said that Aftab stored the pieces of Shraddha's body in a fridge and disposed it piece by piece every night in a forest area near his house. Sansani number 2. The Indian Express reported that while the body was stored in the fridge, Aftab invited a Bumble date home. You know when your girlfriends jokingly tell you blind date pe ja rahe hai, dekh lena kahin serial killer na nikle. That joke kind of took a real turn this week. Now this case is as open and shut as they come. The killer has confessed. The police's main job is to gather solid forensic details to nail him in the court. The motive, the modus operandi, all of it is clear. But for TV newswallas, this is not a simple open and shut case. This is a case that has the whole nation hooked. Like a true crime serial about a gruesome psychopath. The nation wants to know कि भाई आज के एपिसोड में क्या नया मिलेगा. हर रोज पब्लिक को एक सेंसेशनल, एक सनसनी ट्विस्ट मांगता है. और जहाँ डिमांड हो वहाँ सप्लाई तो होगी ही होगी. टुकड़े टुकड़े लव स्टोरी. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. फिर 35 टुकड़े. लव साजिश और 35 टुकड़े. लापता खोपड़ी करेगी खूनी रात का खुलासा. जिस फ्रिज में इस आदमी ने, ये भी नहीं कि फ्रिज रख दिया चलो इसमें डेड बॉडी रखनी, उस फ्रिज को यूज कर रहा है. पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक फ्रिज में शव के टुकड़ों के साथ आइसक्रीम रख रहा था, ये कोल्ड ड्रिंक रख रहा था, ये वो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खा पी रहा था. ये रियली सुशांत, ब्रांड भी बता देते आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का. फ्रिज में लाश, बगल में लड़की. फ्रिज में श्रद्धा की लाश, दूसरी लड़की घर लाया अय्याश. आफ्ताब कटे सर से करता था बात. कहानी में हर पल एक सेंसेशनल सनसनी ट्विस्ट मांगता है. पहले बॉडी फ्रिज में स्टोर किया, फिर सर को रोज देखने लगा और फाइनली आफ्ताब सर से बात करने लगा. The source of this story seems to be ANI. Sources said Aftab used to sleep in the same room where he had chopped the victim's body. He used to see the face after keeping it in the fridge and also cleaned the fridge after disposing the body parts, said sources. While the Delhi police is busy cracking the case, crime reporters are busy finding sources जो हर शाम के एपिसोड के लिए कुछ मसालेदार दे सकें. और जब सोर्सेस साथ ना दें तो ड्रामेटिक्स का साथ तो ले सकते हैं. इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहरौली के उस जंगल में जहाँ पर आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर करके इन्हीं जंगलों में उसके 35 टुकड़े करके फेंक दिए. अपने पिट्ठू बैग में दरअसल उनको लेकर आता था एक काली पॉलिथीन जिसके अंदर वो उन पीसेस को रखता था और फिर इन्हीं जंगलों में यहाँ पर फेंक देता था ताकि किसी तरह से कोई सुराग जो है वो उसका ना लग पाए. अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह के काले पॉलीथीन में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो इन घने जंगलों में फेंकता रहा. आशंका ये है कि इसी तरह के पॉलीथीन में कुछ ऐसे अवशेष और पुलिस को मिल सकते हैं. ठीक इसी तरह का था. यू श्योर राइट? हम दिखाना चाहते हैं कि ये वही आड़ी पत्ती हो सकता है जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा को पीस पीस काटा था. आप देख सकते हैं रिपब्लिक भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये आड़ी पत्ती वही हो सकती है जिससे बताया जा रहा है कि श्रद्धा को काटा गया था. Attention Delhi police. Republic has found the murder weapon. पुष्टि आप कर लेना. ये जो जंगल है, किस तरीके का ये जंगल, क्या आप हिम्मत कर पाएंगे रात में 2 बजे इस जंगल में आने की? नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा. मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी. बट मैं साइको भी तो नहीं हूँ. वो इतना चालाक था, इतना शातिर था कि उसके दिमाग की बात करिए आप कि उसने उसको जो शवों के टुकड़े हैं उनको पॉलिथीन में यहाँ इसलिए डाला था ताकि जानवर उसे खा जाएं, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उसे डिकम्पोज करते. NDTV of course is not like these channels. They are different. So they did a very different ground report. आफ्ताब अमीन पूनावाला ने छतरपुर की जिस दुकान से फ्रिज लिया था, मैं उसी दुकान पर हूँ. ये वाला जो मॉडल है ये उसने लिया था. क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज्यादा होता है इसमें. अच्छा, डबल डोर का बड़ा स्पेस ही स्पेस वाला फ्रिज.
I'm pretty sure that is not the publicity LG was looking for. तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा। आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ? क्या बोलेगा बेचारा यार, वो खून टपक रहा था उसकी आंखों से, 2 सींग भी निकले थे आफ्ताब के जब वो फ्रिज खरीदने आया. What do you expect him to say? The other channel that upped its ground reporting game this week was News 18. आफ्ताब मर्डर तुमने ही किया है? आफ्ताब मर्डर तुमने ही किया है? क्या इसी जंगल में तुमने उसके शरीर के टुकड़े, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े इसी जंगल में तुमने फेंके? Learning from the absolutely best in the industry, of course. Meanwhile, ABP ने सोचा तुम ग्राउंड रिपोर्टिंग करोगे, हम फैंसी ड्रेस करेंगे. Rubika's primetime show was having a severe identity crisis. Is it a news show? Or is it a horror show? Or is it a horror news show? Or is it a horror of a news show? मास्टर स्ट्रोक के स्पेशल एडिशन को इस वक्त आप देख रहे हैं और ये उस सेम स्टूडियो से नहीं बल्कि उस इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हम कर रहे हैं. पूरी दिल्ली पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकती ये केस अलोन. एबीपी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था. व्हाट वुड द दिल्ली पुलिस डू विदाउट एबीपी's इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड टिकर्स लाइक जूता, मिट्टी और हड्डी जुड़ेगी कड़ी से कड़ी. बाय द वे, हड्डी एंड कड़ी डोंट रियली राइम. मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इनपुट एडिटर आज फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ यहाँ इस लैब में मौजूद हैं इंद्रजीत राय. इनपुट एडिटर फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है, ये सही है. न्यूज चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको फोरेंसिक साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं. इनफैक्ट आपके पास तो ब्लड सैंपल्स भी जी. मैं ये दिखाने की आपको कोशिश करूंगा. ये एक स्लाइड है ब्लड की, इससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. ये रियल ब्लड है. अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीच से इसको साफ किया जाएगा तो जो इसकी आउटर लेयर है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, इसकी आउटर लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. यानी कि ब्लड की इन कोशिकाओं से डीएनए मिलना मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा. तो जो किलर ने सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीच का इस्तेमाल किया, उसका पर्पस यही था. The input editor on the show actually made a lot of sense. Thank you, Indrajit Rai, for your valuable interventions. But ABP News, did you have to make him do a fancy dress competition and make him wear a lab coat? He would have given us the same information without the lab coat or the skull or such graphics. Of course, ANI sources made an entry here too. श्रद्धा का जो सर है इसने बकायदा फ्रिज में रखा और उसे रोज ये देखा करता था. रोज उसे देखने के माने क्या है कक्कड़ साहब? रोज देखता था, एक बार सुबह की चाय पीने के बाद और एक बार शाम को सोने से पहले. रूबिका, यू फॉरगॉट, वो बात भी करता था सर से. रिपब्लिक भारत नहीं देखा तुमने? अच्छा, मैं ये समझ गई कि वो इमोशनली डिस्कनेक्ट था, बट व्हाट अबाउट हैवानियत? What about haiwaniyat? What about haiwaniyat? रूबिका जी, कितनी भोली हैं आप. Clearly this guy is not like you or your panelist. He's a cold-blooded murderer. I understand you're trying to understand this issue. But what about haiwaniyat? इस सवाल पे आपको क्या ही जवाब मिल सकता है? Forget haiwaniyat anyway. Arnab has solved the case already. Even if Aftab is the most experienced criminal, it is impossible, I say impossible, for him to have executed the barbaric operation entirely on his own. Was Aftab working with other accomplices? Are there other extremely psychotic killers who were part of this crime and who are on the loose? Where are they? Are they in Delhi? Are they in other parts of the country? Where are they? It's entirely possible that this was an organized crime. In fact, Arnab has not just solved the case, he's leading the investigation. Without him, Delhi police तो कुछ कर ही नहीं सकती थी. Yesterday, I was being criticized by a lot of people saying, you're back to what you do, you're doing a media trial. They said to me, Aniket and Zulfikar Memon, and I said, what do you expect me to do? You want me to stop reporting? You want me to just depend on Delhi police press releases and not do my job? Now, we are putting pressure, I know that. We are putting pressure by doing this kind of coverage. I find that the police is now that there's pressure on the police, they're saying, oh yes, Aftab withdrew 50,000 from her account. Thankfully, Delhi police is under Amit Bhai, so Arnab is controlling himself a little bit. नहीं तो SSR case की तरह Arnab would have made a proper political conspiracy out of this tragic murder case. यही केस अगर कांग्रेस गवर्न स्टेट में होता तो अर्नब के शक का दायरा सीधा एंटोनियो मैनो
और पोप तक जाता. In this noisy debate, we spotted one gentleman who was really trying to make some sensible points. But since it's Arnab's debate, he didn't get to make it. You can't rely on these statements. Tell you that this case is based on circumstantial evidence. There is no direct evidence in this case. No. Not at all. I disagree with that. In fact, he will be remanded to judicial custody, if not police custody after 15 days. I never said that. So he's not I going to be said released that till police he's will granted get bail. complete 15 days of custody. The police will probably have a better idea of the facts. You all are Just one minute. Let me tell you. From the CCTV I think the question that should be asked is this. कोई बात नहीं. अर्नब ने टाइम नहीं दिया. न्यूज लॉन्ड्री है ना. Welcome to News Laundry, Simon. Why don't you finish the point that you were trying to make on Republic? So yes, I just had a short point regarding what the investigating agency is trying to do and what usage they had from those confessional statements. In fact, this is not something that I can confirm, but what I can see from the media reports that there are multiple confession statements of the accused. So the only usage of that confessional statement would have been to look at the recoveries. What kind of recoveries the investigating agency would be making in terms of recovering the murder weapon or things that have been articles that have been used in the commission of the offense, the body parts of the victim. So that's the part which becomes relevant for investigation because those recoveries have arisen out of the confessional statement. They would have taken the accused to those places where they would have recovered those articles or items from, and they would have made a recovery memo, they would have made a seizure memo, and that will become part of the investigation which is going to be relevant, not anything else that the accused is going to say in the confession statement. Like, even if the accused admits to the crime, it's not going to be used against the accused unless this confession is made before a judicial magistrate. Three essential elements to the case. The first being the forensic, because this is a case where there are no eyewitnesses, like we've been reading about it. So clearly they will have to tie up the offense to the accused, and also the identity of the victim that has to be established. So forensic will play a very important role as far as that is concerned. And since they do not have eyewitnesses, they will have to rely upon a lot of digital evidence, the phone records, to try and see the location of the accused person. There was some news article regarding some transaction that he has done with the, from the account of the victim. So those details have to be verified. So all of those digital records will, and the conversations which the victim may have had with her friends, which is on messages, on Instagram messages or WhatsApp messages or text messages. If there's any recorded conversation, recorded call conversation, those will then become relevant to establish motive. Because if she has complained of previous behavior of involving the accused, then that will become relevant there. And the third and most crucial part of this entire investigation would be the statements of the persons who are coming forward and testifying against the accused. So whether it's the father who's the complainant in the FIR, the father of the victim, and the friends who are giving information regarding the past behavior of the accused with the victim, the doctor who treated the accused for his cut. So those sort of people, their statements become then crucial. If you had to advise news channels on how to report on this case, what would it be? Crime is happening all the time, and in many places. The media is also selective in choosing certain cases because of the way an offense may have been committed or the people involved. So when they are reporting such offenses, they also know why they have picked that story to tell to the public at large. So they would want to obviously give a background of the case in terms of why this happened. And that's actually a discussion which should be encouraged, to say that, okay, why did this happen? Let's try and find out the reasons why these offenses are taking place. And definitely discuss about the next steps. What should be done to curb these offenses, to stop or prevent these offenses from taking place in the future, if it can be, if there's a step that can be taken in that direction. But while doing so, they should not affect the current status of that case, which is the investigation. And I think that's where they need to draw an arm's length from, getting involved so much in the investigation. If they're calling witnesses, there should be some sort of regulation to
say that, okay, we're going to be responsible to protect the identity of the witness. We're not going to name them. We're not going to reveal their identity, not show their faces, maybe, protect their voices as well, because they could be identified. So, because what would happen is if such a witness who is important for the prosecution is coming on television or coming on a podcast and giving an interview, even if it's in a newspaper, they're making some statements, they will be bound by that to a certain extent when they go and also make statements towards the investigation, because then what will be seen is consistency, and no person can verbatim repeat the same statement that they made earlier. There will be certain things they might have slipped out in their statement, when they might forget to state, they might change the narrative, they might add a few things, and these people might still be truthful witnesses, but because of these errors, these small mistakes, they will get cross-examined, and it might turn out that this could become a weak link in the case because of the witness choosing to come on television or choosing to come in the media and making a statement previously. So the believability or the truthfulness of the statement then gets affected. Whatever Aftab says right now will not be taken as the whole and complete truth, but it will help Delhi police in cracking the case. Meanwhile, the media should act responsibly and try and not to sensationalize an already sensational case. But sensationalize नहीं किया तो क्या हुआ? Communalize तो कर ही सकते हैं. क्या वाकई हिंदुस्तान में अब हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए लव जिहाद का जो ये मिशन है वो चल रहा है? क्या वाकई में हिंदू बेटियां जो हैं वो टारगेट पर है? लव जिहाद, कितने जल्लाद. ये जिहादी मानसिकता, ये कट्टर सोच देश में पनप रहा है. श्रद्धा का प्रेम, आफ्ताब का जिहाद, आरी से 35 वार. चलो एक्सपर्ट्स की सुनते हैं. VHP स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल ऑन इंडिया टीवी. ये जिहादी को पता था मेरे को करना है इसका, या तो धर्मांतरण करना है, नहीं तो इसका सुपड़ा साफ कर देना है. और ये एक नहीं है सौरभ जी, अनेक घटना है. और दिल्ली जो है जिहादियों की जन्नत बन चुकी है. एक्सपर्ट नंबर 2 आचार्य जी ऑन रिपब्लिक, उसी किरदार में. आपके मिशन पे था, मिशन लव जिहाद पे था, वो आप पूरा करने के लिए था. आप तो उसको जिहादी बना के बैठे थे कि भैया धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, जिहाद की लड़ाई लड़ रहा है. अब इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए थ्रो इन 1 टीवी मौलाना. 5 मेरे पास ऐसे 1000 पेज की रिपोर्ट है, 1000 पेज की, 1000 से ऊपर केस है कि जिसमें लगातार सारे लड़के, कभी आफ्ताब, कभी मोमिन, कभी कोई और, कभी राहुल बन जाते हैं, कभी समीर बन जाते हैं. ये एक के बाद लगातार केस है, वीडियो में सामने आता है. जब रिपब्लिक से जी भर जाए तो न्यूज 18 लगाएं और सेम फॉर्मूला पाएं. एक्सपर्ट नंबर 3 साध्वी जी. देखिए अमन, जब कोविड फैला तब सब लोग मास्क पहने, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, फाइन्स लगाने पड़े थे. क्यों? क्या कारण था? इंसान की फितरत है लापरवाही की. सब यही सोच रहे थे कि मुझे कोविड नहीं होगा. ठीक वैसे ही इतने लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं, काउंटलेस, डे बाय डे. फिर भी हमारी बहनें कह रही हैं मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है. लव जिहाद हो या कोविड, सेम. आफ्ताब से बात हो, पूछा जाए कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम कैसे दिया. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं और ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये पैरवी किसकी कर रहे हैं. ये उस आरोपी की पैरवी कर रहे हैं जिसने एक लड़की को 35 टुकड़ों में काट दिया और उसके बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया. बोलिए, मैं नमाज को जा रहा था, पब्लिक परेशान हो रही थी, नमाजियों को आप लोग परेशान कर रहे हो. मैं नमाज को जा रहा था, पब्लिक परेशान हो रही थी, नमाजियों को आप लोग परेशान कर रहे हो. देखिए हम आपको बताते इधर आइए, उज्जवल यहाँ आइए. इस सब में नंबर 1 जिहाद एक्सपर्ट कैसे पीछे रहेगा? किसी भी रिश्ते में जब 2 लोग एक साथ आते हैं तो इस दौरान ये बात बहुत मायने रखती है कि दोनों लोगों की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है और वो किस धार्मिक और सामाजिक परिवेश से आते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे धार्मिक या सामाजिक परिवेश से आता है जहां महिलाओं को सिर्फ एक उपभोग की मामूली सी वस्तु माना जाता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं देगा जिसकी महिला हकदार है. इस केस में भी यही हुआ. आफ्ताब एक ऐसे धार्मिक और सामाजिक परिवेश से आता है जहां महिलाओं का बस यूज एंड थ्रो होता है. आफ्ताब का धार्मिक परिवेश क्या है?
मुस्लिम। तो भाई आप मुस्लिम को बम्बल पे राइट स्वाइप करोगे तो यू आर इन्वाइटिंग योर ओन डेथ। टुकड़े टुकड़े तो होंगे ही आपके। What a creative way of blaming the victim, Sudhir Chaudhary. I truly wonder how Muslims and Hindus in the India Today group don't speak up against such revolting and vile programming. How can young people in the group tolerate such crap? Sudhir ke liye this data does not exist because young Indians are on dating apps. School time, anchors ka school time. Beta Sudhir. So according to your logic, 31 million Indians are on dating app. 53 million Indians are unemployed. तो 31 million का तो समझ आता है. They are unemployed because they are wasting their time on Bumble and Tinder. Even the rural youth in Uttar Pradesh. But what about 22 million? उनका क्या? Why are they unemployed? Are they wasting their time watching your show? बकवास लॉजिक है तुम्हारा. बिल्कुल बकवास लॉजिक. नकली. What can be more tragic than the gruesome murder of a young woman? The mindless, senseless misuse of her murder by the media to spread the same old communal bile for TRPs. It's not love jihad when a person knowingly enters a relationship with a Muslim man, which is what happened in this case. In fact, Shraddha's parents were against this relationship precisely because Aftab is Muslim. So where is the deception? Not so long ago, a Dehradun techie was arrested for killing his wife and cutting her into 70 pieces. The couple in this case were not in a live-in relationship. They didn't meet on Bumble. The man was not Muslim. Clearly, the problem is not all these things. The problem is crimes against women. According to the NCRB crime report released this year, crimes against women increased by 15.3% this past year. Love affairs gone wrong is one of the top reasons for murder. That means a woman getting killed by her own lover is way more common than we imagine. And if you think it's only these live-in types who suffer, news flash. The majority of cases of crimes against women recorded by NCRB in 2021 are registered under the category of cruelty by husbands and relatives. 50% of female suicides were housewives. So it's a little more complicated than what Rubika types would like you to believe. लेकिन मुझे श्रद्धा से भी बात करनी है क्योंकि मेरी शिकायत श्रद्धा से भी है और ये शिकायत श्रद्धा तुमसे इसलिए है क्योंकि 25 साल तक जिन माँ बाप ने तुम्हें कलेजे से लगा कर रखा, तुम जिनका जिगर का टुकड़ा थी, जिनका हाथ पकड़कर 25 साल तक तुम अपनी जिंदगी का हर लुत्फ उठा रही थी, इस आफ्ताब को जाने कुछ महीने ही हुए थे, इससे मोहब्बत हुए तुम्हें कुछ ही महीने हुए थे, तुमने उस 25 साल की मोहब्बत को दरकिनार कर दिया. A young woman loses her life to a barbaric crime. By all accounts, she's in an abusive relationship. Rubika, newsflash again, but 1 in 3 women in India is likely to have been subjected to intimate partner violence. So instead of passing judgments on someone who's no longer there to defend her choices that went horribly wrong, maybe you should do your job as a news anchor. Crimes against women range from murder to rape, stalking, acid attacks, kidnapping, domestic abuse, dowry deaths, and yes, honor crimes, where often families and parents turn killers because they don't approve of their kids' choices of partners. Instead of thaka hua aunty-type bhashanbazi, doing jungle walks and showing us polybags and knives and double-door fridges and skulls and coming up with bizarre theories, news anchors should maybe spend a little more time on the nature of crimes against women in this country and maybe have discussions on what we can do to make the country safer for all women. That's all the nuisance we have for you this week. We're going to be on a break till the Gujarat elections end and till the results for both Gujarat and Himachal Pradesh elections come out. So we're going to take about 3 weeks gap from Nuisance. I hope you liked this episode. Please share this with your friends and family. We want this episode to reach more and more people. We want more and more people to discover Nuisance. So please spread the word, spread this episode with people, and of course, leave your comments and your feedback in the comments section.